Hello students, hello, welcome to my biocool class. तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इज अबाउट CBC practice questions. So CBC has released these practice questions. ये जो practice questions, these are very important. ऐसे ही questions you can expect in the main CBC exam. So today we will be doing the bio part of these practice questions in details, and after each question के बाद we'll have a detailed explanation. So without further ado, let's start. Section A जो है यहाँ पे, Section A is basically यहाँ पे we will have some kind of multiple choice question जैसे pattern है Section A का, and it carries 1 marks for each question. So the first question which we see कि यहाँ पे एक they are giving a diagram like that, और इस diagram में they are actually showing कि बीच में there is plant, and from plant we see 3 arrows coming out, and so we have X, Y and Z. तो यहाँ पे X is oxygen coming out. So we know कि plant से कब oxygen आता है? We know that is obviously the process of photosynthesis, right? During the process of photosynthesis, what is happening? Carbon dioxide, water, carbon dioxide from the air, water from the roots, or say we have glucose formation C6H12O6, and we have oxygen coming out, right? So ये जो oxygen, which is basically a result of photolysis of water, है ना? Because of photolysis of water. और ये जो this glucose is because of the Kelvin cycle, and because of the Kelvin cycle we see the glucose is coming out. तो ये जो oxygen that is coming out, so this is basically photosynthesis. यहाँ पे Y is showing कि carbon dioxide is coming out. So obviously plants they also carry out respiration. तो ये हो गया respiration. Respiration सिर्फ एनिमल में नहीं होता है, respiration plants में भी होता है. In fact 24/7 the respiration is happening, all the time respiration taking place. Finally यहाँ पे जो Z है, देखो यहाँ पे पानी निकल रहा है. So identify the process taking place at Z. Z कैसे plants में पानी comes out? Through the process of transpiration, right? What is transpiration? Transpiration is basically जब plants का जो leaves है, right? Leaves में there is the stomata, right? Leaves के lower epidermis में there is these kind of guard cells, और guard cells are basically guarding the stomata, right? So ये stomata से the evaporation happens and पानी निकल के आता है. So this को we call this as transpiration process, and transpiration leads to also the transpiration pull, जिसके लिए because of transpiration pull the water is actually rising up through the xylem, है ना? Xylem से जो पानी का जो column जो बनता है, right? So that is because of the transpiration pull, which is a major factor which causes the movement of water and minerals in the plant, है ना? तो transpiration is the answer. So यहाँ पे B will be the answer, not reproduction, not photosynthesis, not translocation. Okay, so let's move on. So B, transpiration, is the answer. So next question is about this diagram, और इस diagram में we can see कि there are actually
four inverted glass jars. तो four inverted glass jar है. So the lime water turns cloudy in the presence of a gas which is a byproduct of respiration. यहाँ पे कह रहा है कि lime water, there is lime water. तो यहाँ पे lime water is present in these. देखो यहाँ पे जो ये जो all these kind of pans में, right, in this plate there is lime water, and it says the lime water turns cloudy in the presence of a gas which is a byproduct of respiration. So कौन सा gas we are talking about? Obviously carbon dioxide, right? So carbon dioxide है ना, ये एक गैस है, and this reacts with lime water, and this lime water becomes milky, or we can say cloudy. So question is, lime water turns cloudy in the presence of a gas which is a byproduct of respiration. Cellular respiration में we know कि carbon dioxide comes out. Cellular respiration, again we have glucose, which is the respiratory substrate, and this glucose is broken down in the presence of oxygen, और we see कि यहाँ से carbon dioxide, water vapor and ATPs में. ये हो गया cellular respiration. ये हो गया cellular respiration. So ये जो carbon dioxide, so this carbon dioxide is now reacting with lime water and forming cloud. Shown below are four setups P, Q, R and S kept in the sunlight for 24 hours. 24 घंटा sunlight के अंदर these setups are given. अभी we have to say in which setup. देखो question को ध्यान से पढ़ना. ये CBSE का main thing is that if question को बहुत time students ध्यान से नहीं, they don't read properly, तो उससे mistake हो जाता है. So it is saying in which setup lime water expected to be cloudiest. In which setup is lime water expected to be the cloudiest? कौन setup पे सबसे ज्यादा cloudy होगा, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगा, एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड मोर लाइम वाटर के साथ रिएक्शन, एंड इट विल फॉर्म अ वेरी क्लाउडी एंड वेरी मिल्की लाइम वाटर. कौन सा सेटअप में? तो फर्स्ट जो सेटअप है, पी जो सेटअप है, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई प्लांट ही नहीं है. नो प्लांट, नो कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको हम पहले ही क्रॉस कर देते हैं. सेटअप एस में भी सेम प्रॉब्लम, देयर इज नो प्लांट, सो नो प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं होता है, तो इसको भी कट देते हैं, राइट. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्यू एंड आर. अभी क्यू में दिस इज अ ग्लास टैंक, राइट, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. आर में द टैंक इज कोटेड विद ब्लैक पेंट. तो टैंक इज कोटेड विद ब्लैक पेंट का मतलब यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे रीच नहीं हो रहा है, राइट. सो इन दिस सेटअप सनलाइट इज रीचिंग, यहाँ पे sunlight is coming, और sunlight आके क्या होता है? sunlight is carrying out photosynthesis. So we can say in setup Q, photosynthesis is taking place. So photosynthesis से क्या होता है? यहाँ पे ग्लास जार के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, whatever carbon dioxide is there, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड is taken inside because carbon dioxide is one of the major raw materials of photosynthesis. इसको leaves are taking through the stomata and they are carrying out the Kelvin cycle, है ना. ये जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इट कैरीज आउट डार्क रिएक्शन, और इससे क्या होता है? इससे ग्लूकोज इज मेड. ऑल्सो देखो ये भी सच है कि प्लांट्स ऑल्सो कैरी आउट रेस्पिरेशन, सो कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रहा है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कमिंग आउट. ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, बट वी नो कि इन अ डे टाइम photosynthesis is more than the respiration. So ultimately end product यहाँ पे carbon dioxide will be actually taken in, है ना. जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा through respiration, more carbon dioxide will be taken in a daytime. Okay. So यहाँ पे few carbon dioxide might be there because 24 hours के लिए we have kept it, है ना. तो after the sun goes away, देखो plants will carry out respiration. So yes, I'm not saying कि carbon dioxide यहाँ पे नहीं होगा. So कुछ carbon dioxide will come out here and that will make the lime water cloudy.
बट ये जो सेटअप है यहाँ पे द जार इज ग्लास जार इज कोटेड विद अ ब्लैक पेंट, तो यहाँ पे देर इज नो चांस ऑफ एनी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे लाइट घुस नहीं सकता. तो ओनली रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस. ओनली रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस. सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट एंड दिस होल ग्लास जार विल बी saturated with carbon dioxide. ये सारे carbon dioxide will react with the lime water, and so we can say कि R will be the cloudiest, among this. So यहाँ पे setup C is the answer. Setup R is the cloudiest. That's what the logic is saying. So C is, to set up R is the cloudiest. Next we go, देखो यहाँ पे this is a question from the heredity chapter. मेंडेलियन क्रॉस का चैप्टर है, मेंडेलियन क्रॉस का टॉपिक है. So let's see what is the topic. The question is saying कि a homozygous dominant guinea pig. Homozygous dominant, यहाँ पे पहले ही कह रहा है homozygous dominant. It's homozygous and dominant guinea pig with black fur. तो अभी इस सेंटेंस में ही in this part of the sentence only we know it is actually a homozygous dominant guinea pig with black fur. So black fur is basically a dominant character. So we can write K, let's say capital B stands for black fur. Capital B stands for black fur. Is crossed with a homozygous guinea pig with a white fur. So अभी already we know कि ये जो fur का color है. So basically we are talking about the fur color. Now fur color can be black, fur color can be white. तो ऑलरेडी यहाँ पे कह चुका है कि फर कलर जो ब्लैक है वो डोमिनेंट है. तो फर कलर जो व्हाइट है इट इज रिसेसिव. सो व्हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी विच इज अ व्हाइट फर. ओके, सो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स कैपिटल बी इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज अ पिग विद अ व्हाइट फर. ये क्रॉस ऐसा, दिस इज द नेचर ऑफ द क्रॉस, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द क्रॉस. The F1 generation is crossed with itself. So F1 is self cross. So we can draw like that. Capital B, small b. ये हो गया black, ये हो गया white. So black fur crossed with white fur. ये हो गया parental generation, that is P1. So now when we cross it, F1 में there will be heterozygotes. This is the F1 generation where we have the heterozygotes. So यहाँ पे we know कि capital B is dominant over small b. तो 100% of the guinea pigs, 100% of the guinea pigs will have black fur. Okay. Now F1 generation is self cross. यानी कि we are moving to the F2 generation. So what are they asking? They're asking कि what percentage of F2 generation is expected to have white fur. तो ये तो हो गया normal monohybrid cross का result. We all know कि in a monohybrid cross F2 में what is basically the, इसके लिए solve करने का कोई जरूरत नहीं है. So we know what is going to be the percentage of the homozygous recessive. फिर भी let's do it. तो F2 में we have capital B, small b is crossed with capital B, small b. ये हो गया self cross. ये self cross पे we know there will be two kind of gametes. This is Mendel's law of segregation, which is the Mendel's second law. तो कैसे देखो यहाँ पे gametes are forming. Two kinds of gametes are forming, capital B, small b. उसको now we can put it inside a Punnett square. So we have capital B, small b, and capital B, small b. So we will have capital B, capital B, capital B, small b, capital B. So इसके साथ इसको capital B, small b, and this के साथ ये small b, small b. So now we have out of all this 25% will be
will have white fur. This is white fur. ये हो गया black fur, ये भी black fur, ये भी black fur. So only 25% of the individuals will have the white fur. That is the homozygous recessive will have the white fur. Clear? So now we go to answer is A, 25% will have the white fur. Next question. A person X suffers from a condition. Person X suffers from a condition that affects the normal functioning of pituitary gland. Person X suffers from a condition जहाँ पे normal functioning of pituitary gland is affected. तो अभी we know the pituitary gland is like that. It is just below the hypothalamus. यहाँ पे hypothalamus, right? Something like this is the hypothalamus in the brain, and then we have the pituitary, and this is the posterior pituitary. यहाँ पे हो गया anterior pituitary. यहाँ से बहुत सारे hormones are coming out, जैसे thyroid stimulating hormone, जैसे growth hormone, जैसे luteinizing hormone, जैसे follicle stimulating hormone. Many different kinds of hormones are coming out, and these hormones, they go and bind to the target site. Target site में it goes and binds and it carries out its different kind of functions. तभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, what is written in the question. Which of the following is most likely a direct effect of person X's condition? So what is person X का condition क्या है कि उसका normal functioning of the pituitary gland नहीं हो रहा है. So pituitary gland is not secreting the hormones. तो अगर किसी का pituitary gland is not secreting the hormones, which of the following is most likely a direct effect of person X's condition? तो देखते हैं अभी pituitary gland ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे choices में कौन सा choice is giving that evidence. First choice, insufficiency of iodine. देखो किसी का अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, उसके साथ इनसफिशिएंसी ऑफ आयरन का कोई संबंध नहीं है. इनसफिशिएंसी ऑफ आयरन विल हैपन व्हेन यू आर हैविंग लेट्स से अ नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट. आजकल बाजार में मोस्ट ऑल सॉल्ट्स आर आयोडाइज्ड सॉल्ट्स. ओके, वी ऑलवेज एनी सॉल्ट यू बाय, Tata salt, Ashirwad, Namak, whatever, you know, they are all actually by default, they are all iodized. So insufficiency of iodine के साथ there is no relation of pituitary gland not working. Second is irregular heartbeat. Again, pituitary gland is not actually controlling the heartbeat. Heartbeat we know के जो hind brain है, जो जहाँ पे we have medulla oblongata. Medulla oblongata is basically controls the heartbeat because medulla oblongata is responsible for all the involuntary actions. तो ये भी नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं होने से वी विल नॉट सी अ हार्ट बीट प्रॉब्लम. इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अभी दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि वी नो के पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से वी नो के ग्रोथ हार्मोन कम्स आउट. ये ग्रोथ हार्मोन गोज एंड बाइंड्स टू बोन्स एंड मसल्स. देखो, बोन्स एंड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, एंड दे कॉज ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स. सो अभी अगर किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं हो रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट हैपनिंग, सो ऑब्वियसली दिस पर्सन हैज अ हाई चांस कि इसका ग्रोथ हार्मोन ठीक से सीक्रेट नहीं होगा. अगर ग्रोथ हार्मोन ठीक से सीक्रेट नहीं होगा तो बोन्स का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ नहीं होगा. सो इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज हाईली पॉसिबल. सो सी इज अ वेरी गुड ऑप्शन. लेट्स लुक एट ऑप्शन डी, इनेबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर. अगेन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है. वी नो कि ब्लड शुगर इज मेंटेन्ड बाय the hormone called insulin. Insulin is the hormone responsible for maintenance of blood sugar. Insulin कहाँ से निकलता है? From the pancreas, islets of Langerhans. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans, ये एक ऐसे छोटे छोटे islets का मतलब just like islands के and islets of Langerhans, ऐसे cells. So उसमें there are some cells called the beta cells. From these beta cells insulin comes out. जब भी we take a sugary diet, जब भी कोई diet खाते हैं जहाँ पे बहुत ग्लूकोज है, जहाँ पे बहुत मीठा है, there is sugar,
whenever the sugar blood sugar level is increasing in our blood vessels, तभी देखो ये इंसुलिन का सीक्रेट होता है कहाँ से, फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन इन द पैंक्रियस, एंड इंसुलिन आके दे एक्चुअली ग्रैब दिस शुगर और इसको सेल के अंदर डालते हैं. सो बेसिकली द ब्लड शुगर लेवल गोज डाउन, right, from a hyperglycemic state, okay, we go to a normal state. देखो in my lecture students, um, since I am mainly I target the NSCGS kind of exams है ना, NCRT NTC exams, तो इसीलिए मेरा लेक्चर में although we are doing CBC, यहाँ पे CBC का practice questions, फिर भी देखो I give extra. So that is the advantage of listening to my lectures कि यहाँ पे सिर्फ CBC का questions we are not solving, also I want to give a holistic view of what's going on, है ना. Okay, so the answer here is C, which is insufficient growth of the body, क्योंकि pituitary gland is not working, growth hormone is not properly secreting. growth hormone अगर secrete नहीं होगा तो body का growth नहीं होगा. Simple concept. Let's move on to the next question. So insufficient growth of the body is the right answer. Next question is the time duration from sowing of seeds. तो ये हो गया the reproduction chapter का question, asexual reproduction chapter का question. So time duration from sowing of seeds to harvest of crops. Time duration from sowing of seeds to harvest of crops is critical for agricultural purpose. ये इसको let's look at this very carefully. So the time duration from sowing of seed to the harvest of crop, यानी कि सीड को मिट्टी में डाल दिया, राइट, उसके बाद ये सीड विल बिकम इट विल ग्रो इनटू अ क्रॉप, है ना, इज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ये जो टाइम फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट है ना, सो करने के बाद जब पूरा प्लांट मैच्योर हो जाता है, ये बहुत ही क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. दिस टाइम ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या है, अगर इसको वी कैन डू इट इन अ जल्दी वे, है ना, अगर वी कैन रिड्यूस द टाइम तो ये फार्मर के लिए बहुत ही इट विल बी बेनिफिशियल. इफ वी कैन रिड्यूस द टाइम, है ना, फ्रॉम द टाइम व्हेन वी सो द सीड टिल वी गेट द हार्वेस्ट, अगर ये टाइम सोचो कि फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इट इज 6 months, तो अगर इसको वी कैन कट डाउन द प्राइस टाइम टू 3 months, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर, क्योंकि द फार्मर उस सेम लैंड में इट कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स. मल्टीपल क्रॉप्स का मतलब द फार्मर कैन मेक मोर मनी मार्केट में. नाउ द फार्मर कैन सेल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप. तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही क्रिटिकल होता है. नाउ लेट्स लुक एट द, तो इस क्वेश्चन को पहले ही देखो वी आर डूइंग पोस्टमार्टम, है ना, क्वेश्चन को पहले ही वी आर एक्चुअली कटिंग एंड डूइंग द पोस्टमार्टम. तो अभी जब ये वी आर लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑलरेडी आंसर हमारे सामने आ चुका है. तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. So again, I'm saying time duration of sowing the seed to the harvest of the crops is critical for agriculture purpose. तो यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है, और टाइम को अगर हम रिड्यूस कर सके दैट विल बी बेनिफिशियल. तो इसको दिमाग में रख के नाउ वी विल लुक एट द ऑप्शन. देखते हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव, सिलेक्ट रीजन व्हाई फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपागेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख के सिलेक्ट अ रीजन व्हाई फार्मर्स दे प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपागेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फार्मर क्यों वेजिटेटिव प्रोपागेशन को प्रेफर करता है. अगेन देखो यहाँ पे टाइम का एक बात है, राइट, टाइम का है. अभी इस टाइम का बात को दिमाग में रख के लेट्स लुक एट द ऑप्शन. देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है. सीडलेस क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रिप्रोड्यूस्ड. अभी वी नो के वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वन ऑफ द एडवांटेज इज लॉट ऑफ फ्रूट्स जो सीडलेस होता है, बनाना, ग्रेप्स, ऐसे बहुत कुछ फ्रूट्स होता है विच एक्चुअली डोंट गिव टू मच सीड्स. तो सीडलेस जो क्रॉप्स होते हैं वी कैन रिप्रोड्यूस दोज बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन. बट यहाँ पे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीडलेस. यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट है
वहां पे सीडलेस का कोई बात ही नहीं हुआ है, वहां पे टाइम का बात हुआ है. सो वी विल, दिस इज नॉट एक्चुअली. सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव सिलेक्ट द रीजन व्हाई फार्मर्स दे प्रेफर सिलेक्ट वेराइटी प्रोपगेशन. ये रीजन ठीक नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मेन जो जो यहाँ पे जो मेन डिस्कशन टॉपिक है, इट डजंट रिलेट टू सीडलेस का बात. नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स प्लांट्स. ये भी सच है कि वेरिएटिव प्रोपागेशन में एक्चुअली इट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. सो बेसिकली द ऑफस्प्रिंग प्लांट इज अ क्लोन ऑफ द मदर प्लांट. बट अगेन यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है, सो अगेन दिस डजंट रियली अप्लाई. थर्ड ऑप्शन, plants grown by vegetative propagation bear fruits earlier. अर्लियर का मतलब यहाँ पे एक टाइम का फैक्टर है, राइट. प्लांट्स ग्रोन बाय वेटिव प्रोपागेशन. वेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है? वी नो वेटिव प्रोपागेशन कैन हैपन फ्रॉम रूट्स. एक रूट्स का पार्ट ले लो, वहां पे एक बड होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You take a part of a stem, again the stem should have a bud. Let's say we are cutting the rose plant, है ना. कटिंग कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है, एक स्टेम का थोड़ा पीस ले लो, उसको मिट्टी में डाल दो, दैट स्टेम पीस शुड हैव अ बड. बहुत जल्दी वहां से रोज विल कम आउट. लीव बर्ड, जैसे ब्रायोफाइलम, लीव का ऐसे मार्जिन में ऐसे बर्ड होता है, ये बर्ड्स दे फॉल ऑन द ग्राउंड, वहां से न्यू प्लांट्स कम आउट. ओके, एंड दिस हैपेंस वेरी फास्ट. वेटिव प्रोपगेशन बहुत जल्दी होता है. नॉर्मल सीड को मिट्टी में डालने के बाद जो प्लांट होता है वो बहुत टाइम लगता है, बट वेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट्स का नॉन सीडेड पार्ट से होता है, ये बहुत जल्दी होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेइंग एग्जैक्टली दैट थिंग. इट इज सेइंग कि प्लांट्स ग्रोन बाय वेटिव प्रोपगेशन बियर फ्रूट्स अर्लियर. Let's look at option D. Vegetative propagation does not depend on external agents of pollination. ये भी सही है, ये सही है, बट इट इज नॉट. ये जो ऊपर का जो जो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट. So C is the right answer. So based on the information above, select the reason why farmers they prefer vegetative propagation, because it can bear fruit faster. That supports the upper statement that sowing of seeds to harvest of the crop, sowing of seeds to the harvest of the crop is critical for agricultural purposes. Okay, we move to the next question. So plants grown by vegetative propagation bear fruits earlier is the right option. So abhi from question number 17 to 20, assertion and reasoning based questions. यानी कि यहाँ पे दो statements will be there. So we have to say whether both the statements are correct or not, and whether the second statement is a proper reason of the first statement. The first statement is an assertion. So देखते हैं what is happening. So A is both A and R, that is assertion and reason are true, and R is the correct explanation of the assertion. B is both A and R are true, R is not the correct explanation. C is A is true, R is false, and D is both are false. Sorry, A is false but R is true. ऐसे different concepts. First जो assertion reason का जो concept है, it is saying कि assertion क्या बोल रहा है कि offspring produced by sexual reproduction, offspring which are produced by sexual reproduction, they show variation. Sexual reproduction में क्या होता है? Sexual reproduction में there are two parents and gametes are formed, जैसे sperm and egg, and these they fuse and they form a zygote. So obviously there is actually variation. Sexual reproduction and asexual reproduction में difference यही है कि sexual reproduction में there is a lot of variation. More variation means more chance of speciation. तो ये sexual reproduction का एक very important characteristics है, and that's why most of the organisms they prefer sexual reproduction, क्योंकि इससे we have a more variation, means the chance of survival of the species is more, है ना. अगर variation नहीं होगा तो species will be extinct. Okay, next. What is the reason? So ये true है, assertion is true. यहाँ पे कोई there is no problem with the assertion. अभी देखते हैं रीजन क्या है कि each offspring produced by sexual reproduction, each offspring that is produced by sexual reproduction inherits all the genes from each parent. यहाँ पे कह रहा है कि there are two parents. Each
offspring produced by sexual reproduction, they inherit all the genes. Is it true? So parents, let's say they have 2 boys, 2 girls. Let's say we have 2 parents and they have 2 girls and 2 boys. You think each and every of these brothers, sisters, her parent ka her gene they will get? No. Some will get father's hair, somebody will get mother's eyes, somebody will get father something, and right, 50% from the father, 50% from the mother. But तो ये जो statement है कि each offspring produced by sexual reproduction inherits all genes from each parents, ये wrong है. That means यहाँ पे assertion is right, but the reasoning का statement is wrong. तो ये अभी हो गया. So basically we are going to look at option number. So we'll look at option number C. कि assertion is true, but the reason is false. Next we have this option this question 19 capillaries have walls that are just 1 cell thick. Capillaries have walls which are 1 cell thick. Abhi we know what are the different kind of vessels. We have arteries, we will have veins. So arteries say arterioles will ultimately form capillaries. Hai na? Capillaries say venules will join to form vein. As the blood is flowing from the heart. So abhi capillaries are very, very thin. Hai na? Capillaries are single. So if I can draw, ye ho gaya arterioles. Arterioles are breaking up into single-celled capillaries. ये capillaries are now becoming venules. ये भी capillaries. So this is basically the capillary bed, and यहाँ पे they are forming venules. So arterioles, capillaries, venules. So ये capillaries are very single. They have walls that are just 1 cell thick. 1 cell thick means यहाँ पे देखो blood is coming. So blood basically what is there? There is RBC is there, right? So basically they are 1 single cell thick. ये होगी assertion. अभी reasoning क्या है कि exchange of materials between the blood and the surrounding cells, exchange of materials between the blood flowing in the capillaries and the surroundings. So this is the capillary bed. The exchange of materials between the blood and the surrounding cell takes place across capillaries. यानी कि there are these kind of cells. These are all these kind of cells surrounding it. The exchange of materials between the blood and the surrounding cells takes place across capillaries. So this reason is actually a proper reason. Why this exchange of materials takes place? Because the capillaries are single cell thick. अगर capillaries बहुत मोटा होता तब ये exchange easily नहीं होता. So when we are looking at a capillary, this is basically let's say this को अगर we are zooming this thing, ये जो capillary होता है, so capillary is made up of cells called endothelial cells. ऐसे endothelial cells, or there is a basement membrane. So endothelial cell and basement membrane. सिर्फ यही होता है. If you looking at arteries में बहुत सारे layers are there. Tunica intima, tunica media, tunica externa, even veins में भी बहुत सारे होता है. But arteries बहुत thick होता है क्योंकि arteries में blood flows in jerk. But when you look at the capillaries बहुत ही simple होता है. सिर्फ एक layer होता है of endothelial cell. Endothelial cells, and there is also a basement membrane. ये इतना thin क्यों होता है? ये thin होने के कारण ये जो exchange of materials at the capillary bed, it becomes very easy. So we can say the assertion is right and the reasoning is also right, and the reasoning is a proper explanation of the assertion, which is basically the point A. So both A and R are true. So A is the thing and R is the correct explanation of A. यहाँ पे let's look at this picture. As I said, this is a artery, this is a vein, this is a capillary. This is a capillary bed. And we can see a capillary on the right side, uska picture.
we can see this is the endothelial cell. ये हो गया endothelial cell, and this is the basement membrane. So endothelium and basement membrane. अभी compared to a capillary, if you look at the artery, we can see artery में कितने सारे layers, tunica, intima एकदम भीतर में, tunica media, tunica externa, कितने सारे layers of cells. वेन्स में भी देखो देर आर मच मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, बट आर्टरी जैसे इतना मोटा नहीं होता, इतना थिक नहीं होता. वेन्स और आर्टरीज में व्हाट इज द डिफरेंस? प्रेजेंस ऑफ द वाल्व. वेन्स में ब्लड बहुत ही धीरे धीरे जाता है, इसलिए वेन्स दे हैव वाल्व. वाल्व के लिए धीरे 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 ब्लड ऐसे इट इज ग्रोइंग ग्रोइंग, इट इज पासिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. आर्टरी में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आर्टरी में द ब्लड इज फ्लोइंग एट अ वेरी 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 एक्चुअली वेरी इन जर्की मोशन, क्योंकि आर्टरीज आर क्लोज टू द हार्ट, और हार्ट इज इन जब जब हार्ट इज इन अ सिस्टोलिक फेज, ब्लड इज कमिंग आउट एंड इट्स फ्लोइंग इन जर्क्स, और ये इट इज पासिंग थ्रू द आर्टरीज. इसीलिए आर्टरीज में देयर इज नो नीड फॉर वाल्व का कोई जरूरत नहीं है, बट वेन्स में बहुत ही धीरे धीरे ब्लड जाता है, इसलिए वेन्स में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाल्व. ओके. So anyway, now here we are talking about capillaries, and we see कि capillaries कितना thin होता है, one single cell thick होता है, and उसमें सिर्फ एक endothelial cell होता है और एक basement membrane. So why इतना thin होने का, what is the significance? So that exchange can take place at the capillary bed. There can exchange can take place. Gaseous exchange can take place between the cells surrounding it and the capillaries. Carbon dioxide comes out from the cells, enters the capillaries. Oxygen leaves the capillaries, enters the cells. ये सब कारण के लिए. So next we move to section B. How do control and coordination? Section B में हर क्वेश्चन का देखो 2 marks. So how do control and coordination in plants differ from that in animals? Give 4 points of difference. So control coordination animals और plants में क्या difference होता है? Control coordination, first of all, broadly we can say कि animals में there is both hormonal endocrine system and the nervous system. Plants में there is only hormonal systems which we call the phytohormones, like auxin, gibberellin, right? All these things are there. Abscisic acid, ethylene gas. So plants only have hormones, but animals में both nervous system and the hormonal system, जिसको हम कहते हैं endocrine system, is there. Plants में we can say everything is coming out of diffusion. Hormones are secreted by diffusion, है ना? एक cell से और एक cell में hormone is passing through diffusion. In case of animals, we can say कि there is hormones are coming out from the glands into the blood vessels. So एक blood से through the circulation, blood circulatory system, the hormones are passing, है ना? Pituitary gland, सोचो वहां से all these hormones are coming and pouring into the blood vessels, or blood vessels say it is going and going to the target organs. तो blood system का कोई चक्कर नहीं है in the plants. We can also talk about in plants, another thing is that plants, they don't have any specialized organs. As animals have these specialized organs like glands, basically, like the pituitary glands. So that is another actually thing. Also, plants में movement is water-based movement. So देखते हैं the differences. So as I said, in case of plant, hormones, they diffuse. In plants, we can see the hormones diffuse to the place of action. So diffusion का एक बात होता है, यहाँ पे hormones move through diffusion. In animal, hormones are carried by blood in blood vessels. So ये पहले difference. Second, plant depend on hormone for control coordination. सिर्फ hormone के ऊपर depend होता है. Animals depends on nerve impulses and hormones. So animals depend on both nervous system and the endocrine system. Hormones in plants are not secreted by specialized glands. यहाँ पे glands का कोई बात नहीं है. Auxin is secreted at the tip of the shoot. Right. So, but in case of animals, hormones in animals are secreted by specialized glands. एक glands का बात है. We have pituitary gland is one gland, right? We also have, जैसे insulin is coming out from the beta cells of the islets of Langerhans. तो यहाँ पे gland का एक concept है in animals. Fourth point, movement in plants occur through change in water content. Change in water content.
चेंज इन वाटर कंटेंट के कारण मूवमेंट होता है. बट इन केस ऑफ एनिमल्स, movement in animals occur through shape and arrangement of proteins in the muscles. यहाँ पे मसल के लिए मूवमेंट होता है. प्लांट्स में इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ चेंज इन वाटर कंटेंट, बिकॉज ऑफ turgor pressure. One big example is basically if you look at the guard cells. ये guard cells कैसे open and close होता है because of the water. Guard cells के अंदर there is this water vacuoles. जब water guard cells में घुसता है, guard cells become turgid and then they open up. जब water निकल जाता है, they become flaccid. It's a very common kind of mechanism plants में कि water based movement, turgidity based movement. But animals में ऐसा नहीं है. Animals में movement is basically muscle based. We have skeletal muscles and protein. We have the actin, myosin just sliding on each other. देखो इसके deep में we will not go, but just to know that our muscles have these myofibrils, and myofibrils के अंदर we have these actin and myosin proteins, है ना, जो they slide during the movement when we do the skeletal muscle का movement. Okay, we move to the next question. Next question is person. ये 2 marks का question है. In the section B, person suffering from liver disease is advised to avoid fatty. यहाँ पे important points में I've actually colored it to avoid fatty and highly acidic foods. तो यहाँ पे 2 concept है. जिसका liver disease है, जिसका liver में somebody suffering, that person is advised to avoid fatty and to avoid highly acidic food. जिसका liver का problem है. Give a reason why each of the foods mentioned should be avoided. Each of the foods का मतलब fatty, and second type of food is highly acidic foods. Why each of these foods mentioned should be avoided by a person suffering from liver disease. अभी देखो यहाँ पे what is the concept? Anybody with a good concept will already understand कि liver, this is liver secretes. How liver helps in digestion? Liver से bile निकलता है. And this bile basically has bile salts, sodium taurocholate, sodium glucocolate. So bile has bile salts, और ये bile जो salts होता है, this bile salt. So bile is basically made up of bile salts, bile salts, sodium glucocolate, taurocholate. Bile also has bicarbonate. तो bile salts का जो concept है, these bile salts they carry out a process called emulsification of fat. यानी कि फैट जो होता है, बिग फैट का जो ग्लोब्यूल्स होता है, फैट ग्लोब्यूल्स, सो बाइल सॉल्ट्स इसको तोड़ के इसका फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है. केमिकल कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर, द फिजिकल अपीयरेंस इज चेंजिंग फ्रॉम अ बिग दिस इज अ फैट और अ लिपिड ग्लोब्यूल. इसको तोड़ के ऐसे छोटे छोटे powdery form में it is changing. So it's not changing. The fat is triacylglycerol, right? Fat का जो scientific name or the biochemical name is you can say triglyceride. So triglyceride ही रहता है, सिर्फ उसका नेचर, इसका फिजिकल डिमेंशन चेंजेस फ्रॉम अ बिग ग्लोब्यूल टू स्मॉल पाउडरी फॉर्म. इसको भी कॉल इमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट. व्हाई इमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट? बिकॉज इसके ऊपर all the enzymes, the pancreatic enzymes, जिसमें lipase होता है, and the intestinal enzyme जिसमें भी lipase, they will actually act on this powdered or emulsified fat, और इससे it becomes easy for lipase to digest, है ना. lipase के लिए ये easy हो जाता है. lipase को अगर if you give a big fat globule and if you give a small powdery fat, emulsified fat, lipase के लिए lipase will efficiently digest the emulsified fat. जो emulsified fat उसको lipase बहुत ही आसानी से digest कर सकता है. तो इस यही है bile का काम. bile helps lipase to carry out efficient digestion. तो जिसके पास bile, जिसका पास liver का problem, liver का disease, that person who's not making the bile properly, उसका fatty food खाना बहुत ही problem हो जाता है. Anybody who has a liver cirrhosis, anybody who has a damaged liver, उसका ये बहुत प्रॉब्लम है. तो अगर let's say if you're having a very oily बिरयानी खाने के बाद, if you're having problems, कोई भी oily food खाने के बाद, if you see recurrent problem, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है,
You should always check your liver. You should do a liver function test, जिसको कहते हैं the LFT test, है ना, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में you can do it, and you should know all your जैसे liver enzymes, whether they are okay or not. अगर liver में damage है, these enzymes will spill in your blood. अगर liver में कोई damage है, तो ये enzymes will reach your blood. तो blood में you will get all this liver enzymes. So that liver enzymes blood में if we detect liver enzymes blood में liver enzymes मिलना is a indication कि liver damage हुआ, liver disease हुआ. Anyway, that's a different level. Again, same concept is that now another concept is liver में there is something called bicarbonate. ये bicarbonate actually it's, देखो, stomach से all the content comes out and reaches the duodenum. So if I draw a G-shaped bag called the stomach, ऐसे stomach से निकलने के बाद all the content is entering the duodenum. Stomach में there is the chyme. Stomach has chyme, which is highly acidic. It is highly acidic. क्यों highly acidic? Because stomach का gastric juice has HCl, right? And this HCl makes the pH of stomach as 1 to 2. 1 इतना acidic होता है. ये acidic food enters the duodenum. अभी duodenum में जो enzymes होता है, pancreatic enzymes, intestinal enzymes, these enzymes they don't work in acidic conditions. इसीलिए liver, which is somewhere here, liver से bile comes and bile has bicarbonate. ये bicarbonate it changes the acidic chyme into alkaline. It changes the acidic nature of the chyme into alkaline. ये बहुत important है. Alkaline होगा तब all the pancreatic enzymes they will work. Pancreatic lipase, pancreatic amylase, pancreatic trypsin, जो which is basically a protein digesting enzyme, they will only work in an alkaline condition. तो अभी जिसका लिवर का प्रॉब्लम है उसका बाइकार्बोनेट ठीक से नहीं निकल रहा है क्योंकि लिवर डिजीज है. तो बाइकार्बोनेट अगर नहीं निकलेगा, अगर बाइकार्बोनेट ठीक से नहीं निकलेगा तो दिस एसिडिटी प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, राइट? क्योंकि बाइकार्बोनेट इज नॉट देयर, लिवर डिजीज हो गया, तो नाउ दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट द हाईली एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक इनटू अल्कलाइन. तो उसका अगर इसके ऊपर इफ दिस पर्सन इज ईटिंग एसिडिक फूड, कोई भी फूड जिसमें एसिडिटी ज्यादा है, देन दिस पर्सन विल बी इन ट्रबल, है ना? So that's the thing. A person suffering from liver disease is advised to avoid fatty food. Why? क्योंकि liver disease जिसका है उसका bile salts नहीं निकलेगा, bile salts नहीं निकलेगा तो emulsification नहीं होगा. So fatty foods को digestion will be problem. Again, because the person having a liver disease will have a shortage of bicarbonate. So bicarbonate अगर नहीं होगा तो this stomach का जो acidic food that will not be converted to alkaline. pH और अगर अल्कलाइन नहीं होगा तो अगेन डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा. ओके, so basically that is basically the answer is given here. Bile which creates an alkaline medium for effective digestion. In absence of bile, acidic food may cause more acidity. Since bile is responsible for fat digestion by converting large fat globules to smaller ones, इसको कहते हैं emulsification, for efficient digestion by the lipase, in absence of which fat will not be properly digested. Next, oxygen mostly is carried by a pigment. Oxygen mostly is carried by a pigment in our blood. Oxygen binds to the hemoglobin, whereas carbon dioxide is transported in dissolved form in our blood. ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है. हेमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बट कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है. कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन वी कॉल इट. सो ये जो होता है बहुत कम होता है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन का उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है जितना हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का अट्रैक्शन. सो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली इज डिसॉल्व्ड इन द is transported as a dissolved form, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी का बहुत अट्रैक्शन है. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी पानी में डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन पानी में उतना डिसॉल्व नहीं होता है. गिव 2 reasons that make
द अबव स्टेटमेंट करेक्ट। तो रीजन नंबर 1 तो ऐसे निकल गया कि कार्ब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन has very high affinity for oxygen. एक hemoglobin molecule can bind to 4 oxygen. We know कि hemoglobin is basically made up of 4 polypeptides. Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Anyway, that is again a bit higher level. So hemoglobin चार ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, क्योंकि hemoglobin के साथ ऑक्सीजन का एफिनिटी बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है and it forms carbonic acid. ये carbonic acid forms bicarbonate and H plus. ये in the bicarbonate form carbon dioxide is transported. ऑक्सीजन के साथ पानी का उतना अट्रैक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज मोस्टली कैरिड बाय a pigment in our blood and carbon dioxide is transported in dissolved form in the blood. तो इसका एक पिक्चर देखते हैं जल्दी से। So carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, and hemoglobin, the red pigment in RBC, has a very high affinity for oxygen. इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में वी कैन सी कि दिस इज द एट द टिश्यू लेवल द एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरी। देखो यहाँ पे दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ये कैपिलरी, और यहाँ पे दिस इज द टिश्यू। सो इनसाइड द आरबीसी कैसे यहाँ पे वी हैव ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसे ये ब्रेक हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन कैसे निकल के इट इज एंटरिंग इनटू द सेल्स। सेल्स दे नीड ऑक्सीजन। सेल से देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है बिकॉज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद देखो कैसे यहाँ पे सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर यू कैन सी इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड को तैर के इट इज नाउ एंटरिंग इनटू द कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज के बाहर में देयर इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में वी नो कि 92% पानी होता है। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ इट इज मिक्सिंग। यहाँ पे थोड़ा स्लो मिक्सिंग होता है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं होता है, द कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम इज नॉट देयर इन द प्लाज्मा। सो यहाँ पे मिक्सिंग थोड़ा धीरे से होता है। कैसे कार्बोनिक एसिड इज फॉर्मिंग H2CO3, दिस कार्बोनिक एसिड इज ब्रेकिंग डाउन इनटू बाइकार्बोनेट एंड H प्लस। इन दिस बाइकार्बोनेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड सीधा जाता है ऑल द वे टू द लंग्स में जाता है, थ्रू द हार्ट एंड थ्रू द लंग्स, राइट। वी नो दैट इट पोर्स इनटू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद कैसे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स। So we know all this concept. Again, in this lecture, we will study extra. क्योंकि I normally teach NSCS, NTC, Olympiad, all these things I teach, right? So यहाँ पे थोड़ा extra I will teach. Although यहाँ पे CBSE का practice questions we are doing, but यहाँ पे भी we will talk in details. Inside the RBC देखो वहाँ पे पानी भी है। ये पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग, बट यहाँ पे कार्बोनिक एनाइड्रेस एंजाइम इज देयर। बिकॉज ऑफ दैट बहुत ही फास्ट कार्बोनिक एसिड इज फॉर्मिंग एंड कार्बोनिक एसिड इज ब्रेकिंग डाउन इनटू बाइकार्बोनेट, एंड दिस बाइकार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग ऑल द वे टू द लंग्स एंड उसके बाद हमारे बॉडी से निकल जा रहा है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। नेक्स्ट, दिस पिक्चर वी आर सीइंग स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का है। पिक्चर वी आर सीइंग बेसिकली एक फूड चेन और फूड वेब का पिक्चर है। वी हैव सेवरल फूड चेन्स एंड सेवरल फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ फूड वेब। तो देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। पहले वी हैव ट्रीज, ग्रास। कैसे ट्रीज को कौन खा रहा है? द हर्बीवोर, दैट्स अ डियर। देन वी हैव स्नेक इज ईटिंग द डियर। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। ये हो गया एक फूड चेन। दिस अनदर फूड चेन। यहाँ पे ग्रास इज ईटन बाय माउस। माउस को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। ईगल इज द टॉप कंज्यूमर। माउस को कैन ऑल्सो बी ईटन बाय द ईगल। ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को ईगल खा रहा है। तो ईगल इज ऑब्वियसली द टॉप कंज्यूमर एंड इट इज एक्चुअली अभी बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस, इफ यू लुक एट दिस, सबसे छोटा कौन सा चेन है? ग्रास, माउस, ईगल, ये सबसे छोटा चेन है। यहाँ पे देयर आर ओनली 1, 2 and 3 ट्रॉपिक लेवल्स। 1, 2 and each of these are ट्रॉपिक लेवल्स। दिस इज द प्रोड्यूसर, ये हो गया द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। ये यहाँ पे जैसे देयर आर एक्चुअली 4 ट्रीज, डियर, स्नेक,
ईगल, यहाँ पे भी 4, ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग एंड ईगल। अगर एनर्जी का बात होता है, वी नो के लिंडरमैन्स 10% एनर्जी, दैट मीन्स ईच ट्रॉपिक लेवल से ओनली 10% एनर्जी विल गो। तो जैसे ग्रास से ओनली 10% एनर्जी विल गो, ग्रासहॉपर से ओनली 10% एनर्जी विल गो, रेक्स 90% जो एनर्जी होता है वो कुछ कुछ देखो दे गेट डिफ्यूज्ड, सम आर यूज्ड फॉर बॉडीली लाइफ प्रोसेसेस, ओनली 10% नेक्स्ट लेवल में जाता है, यहाँ पे भी 10% जाता है। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे वॉट एवर एनर्जी इज देयर, 10% बहुत कम ईगल में पहुंचता है। तो अगर एनर्जी का बात देखा जाए तो ये जो फूड चेन, यहाँ पे ईगल को सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली देर आर 1 2 3 ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन फ्रॉम द फूड वेब। वेब क्यों? क्योंकि फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड, माउस को स्नेक खा रहा है, माउस को ईगल खा रहा है, राइट? So it is actually interconnected, easily we call web like a network. So identify and write the food chain, write the particular food chain in the food web. ये से एक वेब है, इसमें सेपरेट सेपरेट फूड चेन, ये एक फूड चेन, ये एक ये एक फूड चेन, ये एक फूड चेन नंबर 3, ये एक फूड चेन नंबर 4. So identify and write the food chain from the food web shown in which the eagle will receive the highest percentage of energy. Already we have formed the answer. ये सबसे छोटा है दिस फूड चेन, तो ऑब्वियसली इफ यू फॉलो द लिंडरमैन 10% लॉ, इस फूड चेन में ईगल को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दो दो ट्रॉपिक लेवल है, बाकी में 1 2 3 ट्रॉपिक लेवल, राइट? सो 10% करते करते बहुत कम मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रास, सो यू हैव टू राइट द होल थिंग, ग्रास, माउस, ईगल, दिस इज द फूड चेन, यहाँ पे ईगल को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म विल बी मोस्ट अफेक्टेड? ध्यान से क्वेश्चन को देखो। when a non biodegradable pesticide is introduced into the soil, non biodegradable pesticide, सोचो कि we are giving DDT as a pesticide, ये DDT कहाँ पे होता है? ये DDT प्लांट में घुस जाएगा, प्लांट से it will keep on going to the next trophic level. So question is asking which organism will be the most affected when a non-biodegradable pesticide is introduced into the soil. What is the phenomenon responsible for this is called? What is the phenomenon responsible for this? ये phenomenon को obviously we call biomagnification. Biomagnification इसको हम कहते हैं। ऑब्वियसली बायोमैग्निफिकेशन का मतलब हर ट्रॉपिक लेवल में दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड फंगाई। इट्स अ सिंथेटिक थिंग, जैसे डीडीटी। डीडीटी ये एक सिंथेटिक पेस्टिसाइड है, इट्स नॉट अ नेचुरल पेस्टिसाइड। सिंथेटिक का मतलब इंडस्ट्री में बनता है, सिंथेटिक है इसीलिए इसको कोई भी डिकम्पोजर्स दे कांट ब्रेक इट डाउन, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन मेड। तो एक बार डीडीटी को दे दो, डीडीटी इज वेरी इफेक्टिव, डीडीटी कैन किल डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट, बट डीडीटी को एक बार फील्ड में डाल दो, डीडीटी विल स्टे इन द सॉइल फॉर अ मेनी मेनी लॉन्ग टाइम। प्लास्टिक जैसे, प्लास्टिक cannot be degraded, it's a non biodegradable thing, it's a human made thing. तो डीडीटी भी एक बार फील्ड में डाल दो, बहुत सालों तक डीडीटी विल स्टे इन द सॉइल, इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट, प्लांट के बाद इट विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे ऐसे इट विल बिकम बायो मैग्नीफाइड। दैट मीन्स टॉप कंज्यूमर जो होता है उसको सबसे ज्यादा डीडीटी मिलेगा उसका बॉडी टिश्यूज में। and we know DDT actually is responsible, it disrupts the calcium metabolism. प्लांट ये जो ये जो दिस बर्ड्स का बॉडी में जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है उसको इट कॉजेज अ प्रॉब्लम इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। इससे बर्ड्स दे ले द एग्स, बट ये एग्स का जो शेल होता है ये शेल बहुत वीक हो जाता है, सो द एग शेल ब्रेक्स अवे, ये एग शेल तोड़ जाता है इवन बिफोर द चिक इज प्रॉपरली डेवलप्ड। तो डीडीटी के लिए बर्ड पॉपुलेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग, right? So which organism will be most affected? Because of biomagnification, the top consumer will be mostly affected. Okay, so so grass, mouse, eagle, एक मार्क्स मिल गया।
eagle will be most affected because of biomagnification. देखो, this is basically a picture of biomagnification. Clearly we can see ये एक पानी में, let's say the concentration of DDT कैसे देखो, it is increasing as we go from water to zooplanktons. तो पहले we have the phytoplanktons पानी में, उसके बाद zooplanktons कैसे देखो, the DDT is increasing in parts per million. Zooplankton में कैसे देखो how many folds increase हो गया, उसके बाद when it goes to small fishes, है ना, 10-fold increase हो गया, 0.5 parts per million. Parts per million is a way to give the concentration of these kind of chemicals. उसके बाद large fish में 2 parts per million. Once we go to the eagle, it is 25 parts per million. So how many times it is biomagnified? It's called biomagnification. So basically eagle का tissue में सबसे ज़्यादा DD concentration will be there, which will cause problem in calcium metabolism of the eagle. Next. Section C. Section C में we have this question कि given below is a table representing the characteristics of two fluids involved in transportation of substances in human body. यहाँ पे fluid A, fluid B का characters are given. Fluid A is, what is it saying? It is colorless, contains less oxygen and contains less protein. Fluid B क्या होता है? Colored, contains more oxygen, contains more protein. अभी देख के we can make an idea कि body में fluid क्या होता है. There are two kinds of systems, right? We have the vascular system, blood vascular system, and the lymphatic system. तो fluid जो A है, it clearly gives all the characteristics of lymph, which is the medium of the lymphatic system. Lymphatic system में lymph flows. तो lymph is colorless क्योंकि lymph का जो composition वो प्लाज्मा जैसा होता है. How is lymph made? In the capillary bed. जब बहुत forcefully जब blood comes, capillary बहुत thin होता है, वहां से the plasma leaks. RBC does not leak. RBC capillary में रहता है. So the plasma lymph का composition and plasma composition is more or less the same. So lymph and plasma, they have same kind of composition. So ये colorless होता है. क्यों colorless? क्योंकि यहाँ पे hemoglobin नहीं होता है. Blood में hemoglobin होता है. Hemoglobin is the pigment which gives the red color to the blood. Since RBC capillary bed में RBC leak नहीं होता है into the interstitial space, इसलिए lymph का composition is not, it is colorless or straw colored, we can also say. Lymph में oxygen कम होता है. So B is blood, A is lymph. Obviously blood has more oxygen क्योंकि यहाँ hemoglobin होता है. Hemoglobin has high affinity for oxygen and it contains more protein. Blood में there are the bigger proteins like albumin, globulin, but lymph में protein कम होता है. So identify A and B हो गया पहले ही. With the help of a flow chart, describe the movement of fluid A from interstitial spaces to the main circulatory system. So now we know this is basically ये हो गया the capillaries. This is the capillaries. Right, this is the capillary bed. तो यहाँ पे green color का, these are the lymph capillaries. So lymph capillaries basically whatever fluid is coming out, जो भी fluid is coming out, this is को we call interstitial fluid. Interstitial, yes, interstitial fluid. ये interstitial fluid is collected by the lymph, है ना. तो lymph capillaries are collecting the interstitial fluid और they are carrying it. So lymph capillaries के बाद हो जाता है lymph vessels. So lymph capillaries, LC, lymph vessels. ये lymph vessels now go all the way to the यहाँ पे heart. So heart को, let's draw the heart like that. Four chambered heart. We have the right atrium, left atrium, the right ventricle, and we have the left ventricle. तो यहाँ पे this is entering into the right atrium. So what is happening? Capillaries, lymph capillaries, lymph vessels, and directly to the heart.
So, with the help of a flowchart, describe the movement of fluid A from interstitial place to the main circulatory system. Interstitial spaces to the main circulatory system. So, देखते हैं. This is basically what is happening. So, interstitial space, उसके बाद limb capillaries, limb vessels, उसके बाद larger veins. Larger veins basically the vena cava. जो vena cava जो heart में enter होता है. We have the superior vena cava, which is coming from the head and the neck, and we have the inferior vena cava जो body के नीचे से आ रहा है. And from the abdomen, all the deoxygenated blood is coming through the inferior vena cava. All right. Next जो है we have the C option कि lymph. So देखते हैं last जो question था उसको. What role does fluid A play in the digestion of food in human? What is the role lymph plays in digestion? First of all, lymph के कारण, if you look at the, देखो, अगर if you looking at the villi of the small intestine, ऐसे देखो villi के ठीक नीचे ऐसे lacteals होता है. They call the lacteals. Lacteals are basically a type of lymph vessels जो absorb digested fat को they actually absorb. So they are basically absorbing digested fat. क्योंकि विलाई में प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज. यानी कि यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होता है, so these capillaries are absorbing protein का मतलब amino acids, simplified proteins are breaking down into simplified form का amino acids, and यहाँ पे glucose, इसको blood capillaries are absorbing. और जो digested fat होता है, that is fatty acids, FA and glycerol, this is absorbed by lacteals. So ये एक function हो गया lymph vessels का. So what is the role of fluid A? What role does fluid A plays in digestion of food in humans? So it absorbs the digested fat. इसको लेके कहाँ पे जाता है? It takes it to the body cells. ये एक फंक्शन है. ऑल्सो फ्लूइड ए लिम्फ का फंक्शन इज दैट ये जो कैपिलरी बेड में ऑल दिस फ्लूइड दैट कम्स आउट, कैपिलरी बेड से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है, इसमें प्रोटीन्स रहता है, इसमें थोड़ा थोड़ा अमीनो एसिड्स रहता है, इस सबको कलेक्ट करके इट इज सेंडिंग बैक टू द ब्लड वास्कुलर सिस्टम. सो लिम्फ इज लाइक अ गार्बेज कलेक्शन. जो भी निकल आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसको कलेक्ट करके उसको फिर से इट इज वापिस कर रहा है इन द ब्लड वास्कुलर सिस्टम. तो देखते हैं. So lymph carries digested and absorbed fat from the intestines back to the blood. ये हो गया इसका role in digestion. Okay. As I talked about the lacteals present underneath the villi of the small intestine, कैसे lacteals are absorbing the digested and absorbed fat from the intestine back to the blood. Okay. This is basically the picture of देखते हैं पिक्चर ऑफ द कैपिलरी बेड. देखो यहाँ पे दीज ब्लू थिंग्स, ग्रीन थिंग्स आर द लिम्फ वेसल्स. लिम्फ कैपिलरीज, कैसे लिम्फ कैपिलरीज, उसके बाद लिम्फ वेसल्स, एंड कैसे इट इज गोइंग बैक टू द वेना कावा. So lymph is collecting all the interstitial fluid, proteins वगैरह वगैरह, all the important things, glucose, everything जो यहाँ पे निकल गया है in the capillary bed में, जो निकल गया है, तो उसको कलेक्ट करके कैसे lymph capillaries, lymph vessels, and this going back to the heart. Okay. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक और भी था, नीचे का पार्ट था. So what is the or saying? The or is saying two major forces help in transport of water in plants. Two major forces help in transport of water in plants. Force A is a driving force in the movement of water during the day, whereas force B helps the movement of water in plants during the night or during the day when humidity is very high. Identify force A and B. So force A क्या होता है यहाँ पे? It's saying कि two major forces help in the transport of water in plants. Force A is the driving force in the movement of water during the day.
दिन के टाइम में फोर्स ए इज द ड्राइविंग फोर्स, whereas फोर्स बी हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम. रात में फोर्स बी वर्क्स, और ड्यूरिंग द डे व्हेन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है. तो अभी प्लांट में मेजर फोर्सेस क्या होता है? वी ऑलरेडी नो कि प्लांट में द फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम इज द टिश्यू जहां पे वी नो द minerals and water are transported. Mineral and water are transported via the xylem, ये पता है. फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में फूड जो होता है, जो लीव्स में जो फूड बनता है, दैट फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. बट ये जो प्लांट का रूट से जो पानी एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब, दैट गोज टू द xylem. And we know कि xylem में what are the different kind of factors? First thing we know कि there is something called root pressure. उसके बाद we know कि there is transpirational pull. Transpirational pull. We also know कि there is cohesion and adhesive forces. Cohesive and adhesive forces. ये तीनों factor are factors which help in movement of water and minerals in the trees and in the plants. अभी यहाँ पे बोल रहा है कि टू मेजर फोर्सेस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ water in plants. Force A is a driving force. So force A is obviously transpirational pull is a driving force in movement of water during the daytime. Force B helps in movement of water during the night time. अभी ट्रांसपिरेशन पुल तो सुबह होता है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल कैसे होता है? बिकॉज देयर इज सन, एंड बिकॉज ऑफ सन देयर इज इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमाटा, और ये स्टोमाटा में इवेपोरेशन जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन होने के कारण एक वैक्यूम का क्रिएट होता है. ये वैक्यूम कॉजेज द ट्रांसपिरेशन पुल. कोएसिव एडहेसिव फोर्स तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे वाटर के बीच में देयर इज द कोएसिव फोर्स, और वाटर और जाइलम वॉल के बीच में एडहेसिव फोर्स. सो यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोएसिव एडहेसिव फोर्स. सो बी जो होता है यहाँ पे, सॉरी, फोर्स बी जो कह रहा है, दैट इज बेसिकली द रूट प्रेशर. ये रूट प्रेशर रात में काम होता है. रूट प्रेशर हैज नो लिंक विद ट्रांसपिरेशन पुल. तो ये सन के ऊपर इसका कोई दिन या रात का, तो सो बेसिकली रूट प्रेशर हैज नो लिंक विद द सन के साथ कोई संबंध नहीं है. ट्रांसपिरेशन पुल हैज रिलेशन विद सन, क्योंकि सन के कारण ही इवेपोरेशन हो रहा है. But root pressure is, what is root pressure? Root pressure is basically roots, they are absorbing minerals by a active process. Roots जो होता है, देखो, these are roots, and these roots they are absorbing water, mainly they are absorbing the minerals with the by active transport. Active transport, minerals are absorbed. So we can say कि roots they are absorbing minerals. They are absorbing minerals. Different kind of minerals like sodium, potassium, है ना? Different kind of minerals को देखो, they are absorbing by active transport. What is active transport? Active transport is a process जहाँ पे ATP का खर्चा होता है. That means basically against the concentration gradient, against the concentration gradient they are absorbing by a process. तो roots are absorbing by active transport, और ये active transport में when they are absorbing, जैसे ही minerals they are absorbing, mineral के साथ साथ पानी भी घुस आता है. जब दे आर एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, उसके साथ साथ पानी भी रूट में घुस जाता है. दिस इज, तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण ये जो पानी घुस रहा है, ये जो मिनरल घुस रहा है रूट में, दिस कॉजेज रूट प्रेशर, एंड दिस रूट प्रेशर के कारण वाटर गोज अप थ्रू द जाइलम. और इसके साथ सन का कोई संबंध नहीं है. सो दिस कैन टेक प्लेस इन द नाइट टाइम, और जब बहुत ही ह्यूमिडिटी होता है, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, ये एक्स्ट्रा वाटर कम्स आउट ऑफ द प्लांट थ्रू दिस रूट प्रेशर. So driving force A is transpiration pull, और यहाँ पे driving force B is the root pressure. Describe how these forces help in the movement of water in the plant. So already I have explained that. देखते हैं, let's look at the answer. The answer says कि the transpiration pull and root pressure. Transpiration pull and root pressure. And number two is that transpiration pull क्या होता है? Evaporation of water. Evaporation of water molecules from the stomata of a leaf due to transpiration creates a suction that pulls water from the xylem
the roots. ये हो गया ट्रांसमिशन पुल. Root pressure is active absorption. Active absorption का मतलब when there is active transport, that means ATP is spent. Active absorption of ions by roots from the soil causes water to steadily move into the root system, xylem, creating a column of water that is pushed upwards. In case of root pressure, the minerals and water are actively transported from. In case of root pressure, minerals and water are actively transported from the roots to the xylem vessel in the stem against the concentration gradient, generating pressure within the roots that pushes the water up the xylem. Okay, अभी देखते हैं कि C का जो point है, that is basically what it is calling. Okay, what is the role of fluid? Describe how each of these forces help in movement of water in the plants. यहाँ पे given extra notes about what is root pressure. What is the note saying? कि a system that allows water to move out of the soil into the plants. Minerals are pumped by active transport, that is uses ATP into vascular tissue. More and more water follows. अभी जब mineral का absorption होता है, water भी follow होता है. So more and more water follows the minerals by osmosis. This produces a pressure on the roots because the roots don't expand. Water cannot leave the root because of the Casparian strip. ये एक different concept है. And root का जो root has the cortex, उसके बाद it has an endodermis. Endodermis में there is actually called a Casparian strip, so it's a different concept. So which normally we need all these concepts in the NSCGS या NTC exams के लिए. We need these concepts. What is Casparian strip? What is Casparian strip? देखो ये symport and antiport जब I teach my students तब देखो I talk about all these Casparian strips and what is the significance of Casparian strips. Beyond the Casparian strip only the symport works, है ना? Antiport doesn't work beyond the Casparian strip. Okay, next question is ozone formation takes place in the stratosphere of our atmosphere. हमारे जो एटमोस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स होता है. ट्रोपोस्फियर फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर या 0 to 12 किलोमीटर, उसके बाद 15 to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर होता है. उसके बाद वी हैव द एक्सोस्फियर, उसके बाद वी हैव आयनोस्फियर. ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स आर देयर. सो ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फियर ऑफ द एटमोस्फियर. Explain how the energy of the sun helps in formation of ozone. Energy of the sun कैसे it helps in the formation of ozone. तो अभी we know कि ये जो in the stratosphere is there always ozone formation and ozone destruction. So कैसे ozone formation? Oxygen के साथ UV radiation is reacting और यहाँ पे we see कि oxygen atom में oxygen is broken down into oxygen atom. अभी ये ऑक्सीजन एटॉम जो होता है ये अभी एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग O3. So this is the ozone formation. So say energy, explain how the energy of the sun helps in formation of ozone. So this is ozone formation. And students, as you can see, ये ozone formation के टाइम में कैसे UV is absorbed. So this is how ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये हार्मफुल यूवी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है. ये यूवी हमारे अर्थ में घुसता नहीं है, राइट? सो ओजोन फॉर्मेशन के टाइम में यूवी इज एब्जॉर्ब. दिस इज हाउ दे आर एब्जॉर्बिंग. अगेन ओजोन डिस्ट्रक्शन के टाइम में ऑल्सो ड्यूरिंग ओजोन डिस्ट्रक्शन ऑल्सो सो ओजोन इज एब्जॉर्बिंग यूवी. और देखो कैसे यहाँ पे एक molecular oxygen and O2 is formed. ये जो molecular oxygen, this is atomic oxygen, sorry, this is atomic oxygen. So this atomic oxygen reacts with और एक atomic oxygen और देखो यहाँ पे O2 is formed. So this is basically ozone destruction. This is ozone destruction and this is ozone formation. So why is ozone formation at ground level considered a pollutant?
अभी ये ओजोन जब स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पे यूवी का एब्जॉर्ब हो रहा है। बट ये ओजोन जब ग्राउंड लेवल में होता है, अभी ग्राउंड लेवल में क्यों ओजोन का फॉर्मेशन होगा? दिस इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज बेसिकली, इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, लाइक देखो व्हाट आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर बेसिकली all the pollutants coming out of fossil fuel burning, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3, नाइट्रिक ऑक्साइड, SO2, SO3, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये सब कैसे आता है? बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, कोल वगैरह वगैरह, ये हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यूवी के साथ और सन के साथ, इट रिएक्ट्स विद द सन रेडिएशन एंड अल्टीमेटली दे आर गिविंग राइज टू, जिसको कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल इज फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन। ओके, so this is the example of secondary pollutants. So ये जो ओजोन, it is formed at the ground level. ओजोन नॉर्मली इज फॉर्म्ड एट द स्ट्रेटोस्फीयर लेवल, बट यहाँ पे ओजोन ग्राउंड लेवल में हो रहा है। देखो ओजोन ग्राउंड लेवल में बहुत ही खतरनाक है। ओजोन इज अ वेरी पॉइजनस गैस। ओजोन अगर ग्राउंड लेवल में फॉर्म हो गया तो वी विल इनहेल ओजोन। ये बहुत ही पॉइजनस है, क्योंकि ओजोन हमारे हेमोग्लोबिन के साथ इट एक्चुअली डजंट बाइंड लाइक दैट, एंड इट्स वेरी पॉइजनस, इससे डेथ हो सकता है। ऑल्सो वेजिटेशन जो होता है, प्लांट्स के लिए ओजोन इज नॉट अ गुड थिंग। ओजोन इज गुड एट द स्ट्रेटोस्फीयर लेवल, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द यूवी। बट ग्राउंड लेवल में ओजोन इज नॉट अ गुड थिंग। इससे आंख में इरिटेशन होता है, सांस में प्रॉब्लम होता है, वेजिटेशन के प्रॉब्लम होता है, ऑल दिस प्रॉब्लम। स्टेट एनी टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इन ह्यूमन हेल्थ। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसको कहते हैं ओजोन थिनिंग होता है, व्हाट आर द टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस? क्या होगा अगर ओजोन लेयर थिनिंग हो गया? यूवी, ऑल द डेंजरस यूवी सी एंड यूवी बी, ये दोनों टाइप ऑफ यूवी रेज आर हाई एनर्जी यूवी रेज। देखो ये अर्थ में पहुंच जाएगा, सो दे आर हाई एनर्जी यूवी रेज। देखो दे विल रीच द अर्थ। इससे क्या होगा? इफ यू आर एक्सपोज टू दिस हाई एनर्जी, हमारे देखो स्किन कैंसर हो जाएगा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम विल फॉल डाउन। सो कैंसर, इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, आंख में कैटरैक्ट हो जाएगा इफ यू आर एक्सपोज टू दिस हाई एनर्जी यूवी। आंख विल, इवन यंग पीपल का देखो आंख में कैटरैक्ट, कैटरैक्ट विल फॉर्म। सो इम्यून सिस्टम फॉल्स डाउन, कैंसर हो सकता है, वेजिटेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ, अगर ओजोन का थिनिंग हो गया। तो देखते हैं, सो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, इट एक्चुअली, अभी देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कैसे ओजोन का जो फॉर्मेशन, ये हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, इट ब्रेक्स अपार्ट सम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। अब ये फ्री ऑक्सीजन देन कंबाइंड विद द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ये हो गया ओजोन फॉर्मेशन। सेकंड, ओजोन इज डेडली टू ह्यूमंस एट लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन एक पॉल्यूटेंट है, इट डेडली टू, यहाँ पे देखो आई हैव एक्सप्लेन्ड एक्स्ट्रा, यहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट कैसे द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्टिंग विद रेडिएशन, कैसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये सेकेंडरी, एक्चुअली ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और प्राइमरी पॉल्यूटेंट उसके साथ फॉग के साथ दे फॉर्म समथिंग कॉल्ड द स्मॉग कॉन्सेप्ट। ये जो स्मॉग होता है, ये एक येलो एक हेज होता है। ये नॉर्मली इन इन इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे यू विल सी स्मॉग इन विंटर के टाइम में। फॉग के साथ दीज थिंग्स मिक्स अप एंड दे फॉर्म अ येलो हेज, इट्स वेरी बैड फॉर आवर लंग्स। थर्ड इज दैट यूवी अगर एस्केप हो गया, क्या हो गया? स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, ऑल दिस प्रॉब्लम विल टेक प्लेस। ओके, देखो डिटेल्स में आई हैव गिवन दिस नोट्स, कैसे इट इज सेइंग कि कैसे कॉफिंग, स्नीजिंग, हेल्थ प्रॉब्लम्स में कितने कार्य हो गया, कॉफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, ground level ozone will cause all these things. Ground level ozone will lead to all these problems, coughing. So ground level ozone can cause a range of health problems, including respiratory issues like coughing, wheezing, shortage of breath, eye, throat irritation. It can harm the crops, reducing the crop yield. ये सब problem हो सकता है. This is basically how ozone is formed.
एंड कैसे देखो ओजोन इज डिस्ट्रॉयड, कि ओजोन मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेडिएशन ब्रेकिंग इट इनटू ऑक्सीजन। देखते हैं यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन इज ब्रेकिंग इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, और एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्सीजन फॉर्म में कैसे ओजोन फॉर्म हो रहा है। तो इसको लेट मी just point out. So oxygen is breaking into atomic oxygen, और atomic oxygen के साथ normal oxygen is forming ozone। ये होगी ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन डिस्ट्रक्शन में कैसे ओजोन इज ब्रेकिंग इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, अभी दोनों एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके कैसे एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग। यहाँ पे भी ऑल्सो वी कैन सी दिस कॉन्सेप्ट। सो कैसे ओजोन फॉर्मेशन, दैट इज ऑक्सीजन से एटॉमिक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन, ओजोन कैसे यूवी के साथ मिक्स करके कैसे इट इज फॉर्मिंग एटॉमिक ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन अनेक is reacting with another actually oxygen to form oxygen molecule. This is ozone destruction. This is ozone formation. This is यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे it's wrong. It is saying it mixes with another atomic oxygen to form the oxygen molecule. Anyway, we go to section D. Section D में question is, this is यहाँ पे 5 marks का question है। Variation in DNA is beneficial for survival of species over time. So variation in DNA is beneficial for survival of species over time. DNA में जो variation होता है, it becomes beneficial for survival of species over time. Now explain an instance where reproduction would be counterproductive to the subsistence of species. And third is, what is the sequence of events that take place in human reproduction when an egg is not fertilized? So first जो part है क्या है कि variation in DNA is beneficial for survival of species over time. अभी ये variation का मतलब क्या है, एक population में let's say there are variations, let's say a bacterial population, वहाँ पे some variation is there जिसके लिए कुछ कुछ bacteria they can tolerate higher temperature। अभी सोचो कि अगर ये जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गया, सो नाउ दिस स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ वेरिएंट बैक्टीरिया जिस विच कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर, ये देखो दे विल सर्वाइव। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो अभी ये जो ये एंटायर बैक्टीरियल पॉपुलेशन में जिसका हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने का क्षमता है, ओनली दे विल सर्वाइव एंड दे विल एक्चुअली प्रोपागेट, बाकी सब मर जाएगा। सो वेरिएशन इन डीएनए इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। अगर वेरिएशन ना होता, अगर सब बैक्टीरिया सेम जैसे होता, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होने से पूरा बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाता, तो एंटायर स्पीशीज वुड हैव बीन एक्सटिंक्ट, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एन इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द सब्सटेंस ऑफ स्पीशीज। का मतलब क्या है, अगर सोचो कि ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, if there is too much of reproduction there will be competition for food, competition for mating, competition for shelter, right? So too much of reproduction will cause scarcity of food, scarcity of shelter, ये सब problem है। So it will be actually counter productive to the substance of species। तो third जो है कि what is the sequence of events that take place in human reproduction when egg is not fertilized। तो देखते हैं थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेरिएशन अलाउज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ ड्रास्टिक ऑल्टरेशन इन निशेस। जब निश का मतलब हैबिटेट का चेंज हो जाता है, अ पॉपुलेशन विद वेरिएशन इज मोस्ट लाइकली टू हैव सम सर्वाइविंग मेंबर्स टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। दैट मींस कि अगर आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अगर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन है एंड ये वेरिएशन, अगर ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट। सोचो कि टेम्परेचर कम हो गया, तो अभी सोचो कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का एक स्ट्रॉन्ग फर है, तो जिसका स्ट्रॉन्ग फर है दे विल ओनली सर्वाइव दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर कम हो गया तो जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग है उसको देखो दे कैन सर्वाइव इन दिस कोल्ड क्लाइमेट, अदर्स मर जाएगा। सेकेंड जो है कि एक्सप्लेन इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। A higher rate of reproduction would lead to unchecked population growth
अगर अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया लीडिंग टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, फूड के लिए फाइटिंग होगा, शेल्टर के लिए फाइटिंग होगा, एंड सब्सिक्वेंट लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हो जाएगा। तब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया तो, राइट, इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में देखो देयर इज सो मच पॉपुलेशन, इट मींस दैट इज एक्चुअली वी आर कम्पीटिंग फॉर एवरीथिंग। अगर इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से कम होके ओनली 500 मिलियन हो जाता, देन जॉब ज्यादा मिलता, एग्जाम्स वुड हैव बीन लेस हार्डर, राइट, क्योंकि दैट इज द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन जब होगा कंपटीशन ज्यादा होगा। थर्ड इज द, अभी अभी एग जो होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो लेट्स से तो ये हो गया, दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी रफली आई एम ड्राइंग इट। ये हो गया यूटेरस, यहाँ पे द सर्विक्स, दिस इज द वजाइना, दिस इज द, ये हो गया द फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ पे ओवरी, ओवरी से एग निकलता है एंड ये इट इज लैंडिंग इन द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे एग के साथ स्पर्म फर्टिलाइज होके दे फॉर्म जाइगोट, ये जाइगोट कम्स इनटू द यूटेरस जहाँ पे एंडोथेलियल लाइनिंग होता है, यहाँ पे द जाइगोट इज द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड एंड यहाँ पे द बेबी इज फॉर्म। ये होता है जब देर इज फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एग लेट्स से दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन 14 डेज, so this is the menstrual cycle का एक the scale, on 14th day the ovulation takes place, that means ovary से egg निकल के it is entering the fallopian tube। तो 14th day में maximum, actually not maximum, you can say that 1 day, 1 and 2 days, that means 14 to maximum 16 day ये egg का condition ठीक रहता है। अगर there is no sperm to fertilize, ये egg becomes degenerated, egg का quality खराब होते जाता है, right? एंड व्हाट हैपेंस के अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दैट मीन्स द फीमेल बॉडी विल नो के it will start degrading the endothelial lining, okay, so this endometrial lining, ये endometrial lining जो होता है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ब्लड वेसल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड ऑल द ब्लड स्टार्ट कमिंग आउट, इसको वी कॉल द पीरियड या मेंसेस। It happens continues till the next 5 days of the next menstrual cycle। तो जब भी एक एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है यूट्रस में ये तोड़ने लगता है, all the blood vessels break down and blood comes out through the vagina and this is called the menses or the period in the female। okay, so एक बार जल्दी से let's see the egg survives for a day after 14th day, maximum 15th day or 16th day in a reproductive system. In case the egg is not fertilized, it is shed along with lining of the uterus out of the vagina as blood and mucus. Okay. All right. So next question number 35. Describe the process of seed formation in a flowering plant. Second question, suggest any two reasons why child marriages are a hazard to reproductive health of women and give any three advantages of using a mechanical barrier over other contraceptive measures to avoid pregnancy। Describe, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि describe a process of seed formation in flowering plants। तो seed formation कैसे होता है? How does seed formation take place? Seed formation, agar we have to talk about the seed formation, this is basically the female part of the flower। ये हो गया the style,
ये हो गया द सॉरी दिस इज सॉरी वेरी सॉरी दिस इज द स्टिग्मा, यहाँ पे हो गया स्टाइल, दिस इज द ओवरी, ओवरी के भीतर दिस इज द ओव्यूल, ओव्यूल के भीतर वी हैव द एग, पोलन ग्रेन, ऐसे यहाँ पे पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब कम्स, इट फर्टिलाइजेस, तो पोलन ट्यूब में इफ यू मैग्नीफाई द पोलन ट्यूब, वहां पे देयर आर टू काइंड ऑफ we call them the sperm nuclei. एक sperm nuclei, it fertilizes with the egg, forming the zygote. और एक sperm nuclei, it actually fertilizes with the two polar nuclei, जो ओविल में रहता है, and they form the endosperm. तो इस प्रोसेस को भी कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे. सो ये एंडोस्पर्म होता है 3n और जाइगोट होता है 2n, दैट इज डिप्लॉयड. अब ये जाइगोट जैसे ही फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म्स द, सो नाउ दिस एंटायर ओव्यूल फॉर्म्स द सीड. ये ओव्यूल एक सीड जैसे हो जाता है, इसका बाहर में एक टफ कोटिंग होता है, एंड जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग एज द एम्ब्रियो. तो यहाँ पे ऐसे एक एम्ब्रियो स्टार्ट फॉर्मिंग, और एम्ब्रियो को आसपास में पूरा यहाँ पे द एंडोस्पर्म इज देयर व्हिच प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो ये हो गया एक सीड, एंड दिस सीड जब भी देखो ये मिट्टी में पानी में आता है, दिस सीड जर्मिनेट्स इनटू अ प्लांट. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सीड फॉर्मेशन. तो देखो यहाँ पे कैसे पोलन फ्रॉम द स्टैमेन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा. स्टैमेन इज द मेल पार्ट, एंड कैसे पोलन जर्मिनेट्स इनटू penetrates to the style, to these the ovary, the male germ cells, then and the female germ cells, they fuse and form the zygote. Zygote undergoes rapid division to form the embryo inside the ovule, right? Zygote undergoes rapid division to form the embryo inside the ovule, and the ovule जो होता है, ovule it develops into the seed coat and turns into seed, और जो ovary होता है that forms the fruit in case of angiosperms. Okay, third जो question है, third question was give any three so suggest any two reasons why child marriages are hazard to the reproductive health of a woman. अगर एक woman she is married as a child, बहुत छोटी उम्र में if she is actually married, तो इंडिया में अभी भी कुछ विलेज में होता है. So suggest any two reasons why child marriages are a hazard to the reproductive health of woman. Child marriage क्यों hazard है? First of all, female will not have the sexual maturity at the time of the marriage. एक बहुत ही एक small girl actually, if she is married who's 10 years, 11 years, okay, उसका कोई maturity नहीं है. There is no sexual maturity, so will not have reached a full sexual maturity at the time of the marriage. Number one, there are possibilities of pregnancy. अगर this small kid, अगर she becomes pregnant in teenage years, that may cause the adverse effect on the female body. एक teenage जो होता है, एक teenage 13-14 का एक जो teenage girl, she is not ready for pregnancy. उसका body ठीक से develop नहीं हुआ है, right? So first of all, तो she has not reached the full sexual maturity, and second of all, अगर गलती से अगर pregnant भी हो गया, तो her body will not be able to actually carry the baby. इससे health problem होगा. All these problems will happen. Uh, Third question is give any three advantages of using a mechanical barrier जैसे condom over other contraceptive measures. अभी what are the kind of other contraceptive measures? जैसे pill, women can take pill. Pill खाने से क्या होता है? Hormones increase, progesterone, estrogen. ये hormone increase होने से क्या होता है? Ovulation stops. No ovulation, no egg. So that's why pill खाने के टाइम में, during pill there is no egg, so the woman they will not conceive. उसका child नहीं होगा क्योंकि ovulation ही बंद हो गया है, egg ही नहीं form हो रहा है, so sperm has nothing to fertilize, right? So they can have so woman taking pill
they can have sexual intercourse without having बेबी फॉर्म होने का कोई चिंता नहीं होता है. 99% ऑफ टाइम देखो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम. तो ये हो गया एक टाइप ऑफ हैविंग पिल. ओरल पिल इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. उसके बाद ऑल्सो सर्जिकल मेथड इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जहाँ पे वी हैव वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वैसेक्टोमी में they are cutting the vas difference. Vas difference क्या होता है? एक the pipe which carries the sperm from the testis to the seminal vesicle. तो इसको they are cutting. So it's a permanent method of permanent contraceptive method. तो मेल्स में वैसेक्टोमी होता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है. So surgical method is also there. Oral pill is there. So what is the advantage of mechanical barrier? So एडवांटेज देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ये ऐसे कॉपर टी जैसे एक डिवाइस फीमेल का यूट्रस में दे पुट. कॉपर टी इज अ टाइप ऑफ आईयूसीडी दे पुट इनसाइड द फीमेल यूट्रस. इससे क्या होता है? इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन टू द यूट्राइन लाइनिंग, ब्लीडिंग हो सकता है. सर्जिकल मेथड्स का क्या कॉम्प्लिकेशन? सर्जिकल मेथड्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली कैन लीड टू इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग वैसेक्टमी, ड्यूरिंग ट्यूबेक्टोमी, है ना, एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ so three advantages of using mechanical. Also mechanical area में STD can be prevented. Sexually transmitted disease देखो, बाकी सब contraceptive measures में oral pill will not stop a person from getting AIDS या syphilis or any kind of STDs, gonorrhea, जो condoms will prevent. Next section E. Section E में this is the last section having 4 marks. Section D had basically 5. Section D में there was 5 marks. Section E final last section. तो यहाँ पे they're giving actually देखो heredity का question है. So 2 human beings who can both roll their tongue produced 11 children, and 3 of these children could not roll their tongues and 8 children could roll their tongues. तो अभी फिर से इसको हम रीडिंग कि 2 human beings who can both roll their tongues produced 11 children. 2 human beings, 2 parents जिसको tongue roll आता है, they can roll their tongues. 2 human beings who can roll their tongues. Roll means टाल को ऐसे, not rolling like that. Rolling का मतलब ऐसे मिड से, they can, some people देखो ऐसे टांग को रोल कर सकता है ना, मिड से ऐसे सांप जैसे टांग को बीच से they can ऐसे, they can fold the tongue. So some people can, they have this thing. So 2 human beings who can roll their tongues. So parents को tongue roll आता है. They produced 11 children. 11 children produce किया. उसमें 3 of these children could not roll their tongues and 8 children could roll their tongues. Okay. अभी क्वेश्चन देखो, which trait, rolling or non-rolling, is controlled by a recessive allele? ये rolling of tongue and non-rolling of tongue कौन सा recessive है, कौन सा dominant है? Second, state all possible genotypes of F1 generation of the cross. Third is show the inheritance of tongue rolling in humans in the given example using a suitable cross. What percentage of offspring will show the same genotype as the parents? What percentage of offspring will show the same genotype as parents? So अभी इसको let's try to solve it. देखो यहाँ पे they're saying कि parents जो है, the parents they can roll their tongue. तो the parents का जो क्रॉस होके we have 11 children, out of 11 children 8 can roll their tongues and 3 children they cannot roll their tongue. तो इससे we can say कि rolling tongue is dominant, है ना, and non-rolling is recessive. अभी देखो पेरेंट्स कैन बोथ रोल देयर टंग. तो अभी रोलिंग को वी कैन गिव कैपिटल आर एंड नॉन रोलिंग वी कैन गिव स्मॉल आर बिकॉज ये डोमिनेंट है. अभी अगर पेरेंट्स अगर होमोजाइगस होता, इफ दे हैड
capital R, तब देखो in the next generation there wouldn't have been no children who can non-rolling children नहीं होता. अगर पेरेंट्स में एक भी पेरेंट्स होमोजाइगस हो जाता तो नेक्स्ट जनरेशन में देयर वुड हैव बीन नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ चिल्ड्रन हु कैन नॉट रोल द टंग. सो पेरेंट्स, both the parents can roll the tongue, so parents have to be heterozygous, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, both mother and father has to be heterozygous by this logic. क्योंकि सेकेंड जनरेशन में कुछ चिल्ड्रंस, 3 चिल्ड्रंस आउट ऑफ 11, देखो दे आर नॉन रूलर्स. तो इससे वी कैन से कि पेरेंट्स का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होगा. तो अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. तो यहां से क्या होता है, वी नो देयर आर एक्चुअली 2 गैमेट्स मेड. हो गया. अभी इसको, so what are the possible type of children we can see. इसको एक सिंपल सा एक पनेट स्क्वायर वी कैन मेक, and we can see k capital R capital R capital R small r capital R small r and small r small r. So abhi, what is the question saying yahan pe? The question is saying which trait is recessive. Obviously non-rolling is recessive. State all possible genotypes of F1. यहाँ पे all positive genotypes we have shown. capital R. तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया पेरेंटल जीनोटाइप. सो 50% ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव पेरेंटल जीनोटाइप. हो गया. अभी एक क्वेश्चन दे विल आस्क, what percentage of the offspring will show the same genotype as parents? What percentage? 50% will show the same genotype. Now एक question है, this is the or part. If one of the parents could not roll their tongues with the help of a cross, calculate the ratio of tongue rollers to non-tongue rollers in the offspring. क्या कह रहा है यहाँ पे कि if one of the parents could not roll their tongue, so one of the parents could not roll the tongue का मतलब that parent is non-roller, यानी कि parent का genotype will be smaller, could not roll their tongue. With the help of a cross, calculate the ratio of tongue rollers to non-tongue rollers in the offspring. So abhi, let's see what is going to happen. So one of the parents abhi non-tongue roller ho gaya. So now, so one parent is tongue roller, another parent हो गया small r. तो अभी इस क्रॉस का क्या होगा? We have this parent will make 2 gametes, ये parents will make only 1 gamete. So अभी इसका जो क्रॉस होगा capital R small r. So now we will have 50% of children will be tongue rollers, 50% will be non-tongue rollers. So T and non-T. That is the answer. Okay. So let's see the. So non-rolling is the recessive trait. उसके बाद so non-rolling is the recessive trait. First था. Second देखो 5th point. Sorry. यहाँ पे this is basically the type of children, capital R, small r, and the question B जो था. Okay. So homozygous, heterozygous, and homozygous recessive. Last जो question था कि अगर one of the parents is non-tongue roller, तब देखो this is basically the cross, और यहाँ पे non-tongue roller और roller में the ratio will be 1:1, right? So 50% will be tongue rollers, 50% will be non-tongue rollers. Okay, so that is the end of this entire session, students. So एक बार so we have gone through different kind of questions in details. I've explained it.
So I hope this video was informative, students. I say keep watching my biocool classes for more such videos. I'll be bringing more actually NSHS ka more questions, CBSE ka more questions. So keep watching my YouTube channel, and I hope my videos will help you to do higher, to get higher in your examinations. All the best. Bye bye.